मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ वंसितू लअल्लकुम तुरहमून। और जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहा करो और तवज्जो से सुना करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो आइए इस बाबरकत तकरीब की शुरुआत भी कुरान पाक के बाबरकत आयात करीमा से करें और इसके लिए सेंटर के उज़ैर बशीर यहाँ पे मौजूद है, वो तिलावती कलाम पाक का फरीज़ा अंजाम देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. صدق الله العظيم. आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, खासकर बच्चों का जिन्होंने पेशेंस रखी, बहुत देर से ये वेट कर रहे हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले क्योंकि प्रोग्राम की जो निज़ामत है वो वादी के मायनाज ब्रॉडकास्टर ऑल इंडिया रेडियो के मीर नज़ीर साहब करेंगे। इससे पहले कि वो निज़ामत का फ़र्ज़ यहाँ पे निभाएं और उसके लिए यहाँ पे आ जाएं,
मैं अपने साथियों से गुजारिश करूंगा, हमने यहाँ पे RNA की तरफ से कुछ कैप्स रखी हैं जिन पर मैसेज है ड्रग एडिक्शन के बारे में, वो फर्स्ट रो को डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि हमारी ये मैसेज जो है ये सब के पास पहुंचे और वाज़ेह तौर पर पहुंचे। शुक्रिया आपका, आपने तिलावत कलाम पाक पेश किया, जज़ाकल्लाह। अब मैं एम फुरकान को यहाँ पे दावत देना चाहता हूँ, वो जो तिलावत कलाम पाक पेश किया गया उसका ट्रांसलेशन यहाँ पे पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे भाई उज़ैर ने यहाँ पे जो आयत करीमा तिलावत की उनका मैं तर्जमा आपके सामने पेश करता हूँ। पहली आयत का तर्जुमा यूँ है, ए ईमान वालों, ये शराब और जुआ और ये आस्ताने और पांसे ये सब गंदे शैतानी काम हैं, इनसे परहेज करो ताकि तुम्हें फलाह नसीब होगी। आयत नंबर 2 का तर्जुमा, शैतान चाहता है कि शराब और जुए के सबब तुम्हारे आपस में दुश्मनी और रंजिशें डलवा दे और अल्लाह की याद से और नमाज से रोक दे। क्या तुम लोग इन कामों से बाज आओगे? आयत नंबर 3 का तर्जुमा, अल्लाह की इताअत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते रहो और उनसे डरते रहो। अब अगर मुंह फेरोगे तो जान लो कि हमारे पैगंबर के जिम्मा सिर्फ आयतों और पैगाम का खोल कर पहुंचा देना है। आयत नंबर 4 का तर्जुमा, जो जिन लोगों ने ईमान लाया और नेक काम करते रहे उनको इन चीजों का कोई गुनाह नहीं जो कुछ उन्होंने खाया। बलगल्लाह बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो दानाए सुबुल मौलाए कुल खत्म रसूल जिसने, वो दानाए सुबुल मौलाए कुल खत्म रसूल जिसने गुबारे राह को बख्शा है फरोगे वादी सीना। मेरी गुजारिश है इकबाल शहीद साहब से जो तशरीफ करना है इस खूबसूरत सी मजलिस में, वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नात अर्ज करूंगा, रहमतन लिल आलमीन है इसका अनवान। ऐ नाज परवर नाज़नीन, ऐ नाज परवर नाज़नीन, या रहमतन लिल आलमीन, दानाए राशु बिल यकीन, या रहमतन लिल आलमीन। दर अर्श यस रोशन दलील बर फर्श सुई नक्शे जमील, दर अर्श यस रोशन दलील बर फर्श सुई नक्शे जमील। मोमिन दिलन छो दिल नशीन, या रहमतन लिल आलमीन। मोमिन दिलन छो दिल नशीन, या रहमतन लिल आलमीन। उम्मीद छु क्या शाने लकब, उम्मीद छु क्या शाने लकब, महजिब ज़मानन ह्योश अदब। उम्मीद छु क्या शाने लकब, महजिब ज़मानन ह्योश अदब। कलमस छु ज़ेद पेठ आफरीन, या रहमतन लिल आलमीन। कलमस छु ज़ेद पेठ आफरीन, या रहमतन लिल आलमीन। हासिल छु तोही आला मुकाम, बाला करू हफ्शु गुलाम। हासिल छु तोही आला मुकाम, बाला करू हफ्शु गुलाम। नाला दीवान ओस दिल हजीन, या रहमतन लिल आलमीन। नाला दीवान ओस दिल हजीन, या रहमतन लिल आलमीन। आओ लोलसान उन्हित सलाम, आओ लोलसान उन्हित सलाम, सकित गयो जेरी कलाम। आओ लोलसान उन्हित सलाम, सकित गयो जेरी कलाम। रबस न खुशीन बरजबीन, या रहमतन लिल आलमीन। रबस न खुशीन बरजबीन,
या रहमतन लिल आलमीन यन आई अश तन गई अशीर यन आई अश तन गई अशीर हन आई गिरदाबस कशीर यन आई अश तन गई अशीर हन आई गिरदाबस कशीर छवटोट वतनिश सरजमीन या रहमतन लिल आलमीन छवटोट वतनिश सरजमीन या रहमतन लिल आलमीन गो आशिका शायर शहीद गो आशिका शायर शहीद ज़ेमशुस कदर वन क्या मजीद गो आशिका शायर शहीद ज़ेमशुस कदर वन क्या मजीद यह मरहले नाजुक तरीन या रहमतन लिल आलमीन यह मरहले नाजुक तरीन या रहमतन लिल आलमीन शुक्रिया। शुक्रिया बाल शहीद साहब। जैसे कौसर सलाम साहब ने मजलिस के आगाज में ही इस चीज़ का खुलासा किया कि टाउन में डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं, कुछ हमारे मेहमान जो इस प्रोग्राम की जीनत बनेंगे और वो मेहमान आने वाले हैं इंशाल्लाह। और लेकिन आपने काफ़ी देर से यहाँ पर इंतज़ार भी किया और हमसे रहा नहीं गया कि हमने कहा कि प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो माशाल्लाह हमने तिलावत कलाम पाक के बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पेश किया और मुझे बेहद अफसोस है कि जो लड़कियां अभी चेयर्स इनके लिए अवेलेबल नहीं हैं, हम इंतहाई माजरत चाहते हैं क्योंकि वो खड़े होकर यहाँ पे ये प्रोग्राम देख रहे हैं। आपका भी शुक्रिया। आपको बता दें कि ये जो डिबेट है आपके सामने जो बैनर लगा हुआ है, ये डिबेट है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा जो मेरी वेरी बिग हैंड फॉर अरूस अली साहब, वेरी बिग हैंड। की तालिबा है। Honorable Chief Guest, Guest of Honor, Distinguished Personalities, dear audience, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself, Arusa Nisar, representing Academy of Commerce and Information Technology at Anantnag. Today, I am going to present my topic on drug abuse and its repercussions. I would like to start my speech with some basic statistical evidences. The society is facing the worst challenge of overcoming the drug abuse. With every passing day, there has been a drastic increase in drug addiction. Alcoholism and drug abuse have become a major social concern. Today, the entire world is confronted with this problem. The society pays a significant cost as drug addiction destroys the youth of the nation. Illicit drug use is a serious concern because younger generation is easily cured to drugs. While on the one hand, the use of drugs and alcohol is increasing, and on the other hand, we find that social taboos emphasize on self-restraint and discipline. The introduction of synthetic drugs and intravenous drugs lead to deadly diseases like HIV/AIDS, hepatitis, and neurological disorders. The harmful use of drugs has a serious social and economic concern. Every day we come across various news that accidents and suicides are common, and they are increasing. The main cause behind these suicides and accidents is drug abuse. Article 47 of the Indian Constitution states that states shall endure to bring about prohibition of consumption, except for medical purposes of intoxicating drinks and of drugs, which are injurious to health. In order to check illicit drug trafficking, a mighty law is created in country, commonly known as Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985. The Government of India, in collaboration with different departments, agencies, police and defense, organizes and takes various measures for providing awareness, identification of addicts, their rehabilitation and de-addiction. However, much more needs to be done with the active involvement of entire civil society with a way to reduce consumption of alcohol and illicit drugs. Preventive education programs should be launched, mass awareness programs be launched, media campaigns should be organized, drug awareness should be part of the curriculum. Society should jointly take measures and the police should take more strict measures so that the drug abuse and illicit trafficking can be minimized and controlled. Let's join hands to help people suffering from alcoholism and drug addiction.
Thank you. शुक्रिया अरोसा निसार और जो जजेस हैं हमारे उनसे मेरी गुजारिश है कि वो थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा ये नशिस्त है प्रोग्राम का जो पार्ट 1 है इसमें हमारे आज के चीफ गेस्ट रहेंगे जनाब हकीम खालिद साहब जो प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर चैम्बर ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड इंडस्ट्रीज के। वेरी बिग हैंड फॉर हकीम खालिद। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो बीच में यहाँ पे सोफे पे आ जाए जनाब हकीम खालिद साहब, प्लीज प्लीज, थैंक यू। और गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे उनको मेहमान ज़िवकार बोलते हैं इस नशिस्त के। आप हैं जनाब SGM अंद्राबी। वेरी बिग हैंड फॉर जनाब SGM अंद्राबी। आपको बता दें कि अंद्राबी साहब जो साबिका SSP विजिलेंस रहे हैं, आपका शुक्रिया, आपने कबूल किया हमारा दावतनामा और ये हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे। और अब मेरी गुजारिश रहेगी होप क्लासेस अनंतनाग की एक तालिबा है सानिया खान से 4 मिनट में वो अपनी तकरीर यहाँ पे करें और डिबेट का हिस्सा बने। बिग हैंड फॉर सानिया खान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। First of all, I would like to thank the host for introducing me with such eloquence. Dear friends, worthy head of institution, distinguished guests, and fellow advocates of a healthier society. Today, I, Sania Khan, stand before you to address a critical issue that plagues our communities, our families, and our future. Drug abuse. It's a problem that knows no boundaries and affects people from all walks of life. But today, I'm here to ignite a spark of hope, a spark that will light the path toward eradicating this dark cloud from our lives. First and foremost, I want you all to imagine a world where children and young adults can grow without the threat of drugs, where communities can thrive in health and prosperity, where families are not torn apart by addiction. Ladies and gentlemen, this is not an utopian vision. This is an achievable reality. And it starts with all of us working together to make it happen. First and foremost, I believe that we must tackle the root causes of drug abuse. We often see that people turn to drugs as a way to escape the burdens of life. We all can agree, right? We must invest in mental health, providing better access to counseling and therapy and resources for those who are struggling with it. Ladies and gentlemen, by creating a society that fosters emotional well-being, we can reduce the appeal of drugs as an escape. Education is another powerful tool in our fight against drug abuse. Instead of simply scaring away by its grim consequences, we must focus on empowering people with knowledge and skills to make healthy choices. Schools and communities can organize programs, workshops, and seminars to educate students about the dangers of drug abuse and benefits of a drug-free life. But it's not about what we know, it's about who we know. Building a strong sense of community can act as a shield against drugs. We can organize local events, neighborhood watch programs to bring people of all generations together, be it children or third age group. Ladies and gentlemen, when an individual feels a sense of belonging and support, he or she is less likely to turn to drugs for solace. Ladies and gentlemen, art is something that can transcend language. It can touch the hearts of individuals in such a way that statistics and facts often cannot.
What I mean to say is that we can engage artists, like writers, painters, to create real artworks that depict the real consequences of drug abuse and dangers of a drug-free life. Ladies and gentlemen, as a student and as a citizen, I have a genuine question for all of you. The question is, where do these drugs come from? Who provides them? We know that our government is doing a marvelous job in eradicating this malady from our societies. But I believe the supply of drugs should be attacked at a very core. These illicit drug-making companies should be banned. These online black markets and underground chemists should be punished. Because if resources is gone, then there is nothing to worry, right? And community-based rehabilitation centers and sport groups are also pretty essential. By offering a non-judgmental space for recovery and growth, we can give those struggling with addiction a hope and support they need to rebuild their lives. Ladies and gentlemen, as we strive to eradicate this dark cloud from our lives, we must also address the issue of stigma. Instead of simply shaming, criminalizing people for addiction, we must treat it as a public health issue. Ladies and gentlemen, understanding, compassion, and rehabilitation should replace judgment and punishment. As we strive, in conclusion, I would like to say that the fight against drugs is not an easy one, but it's a fight we all must undertake for the sake of our families, our communities, and our future generations. Together, through rehabilitation, through communication, through community building, education, and creative arts, we can create a society where drug abuse is just an anomaly rather than a norm. Our steps today will shape our brighter, drug-free tomorrow, where everyone can live a life of fulfillment and purpose. Thank you all for your kind attention, and let us all join hands to make this vision a reality. Thank you very much. शुक्रिया सादिया खान, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने ड्रग अब्यूज़ और इम्प्लिकेशंस के बारे में यहाँ पे कहा। तो मुझे उम्मीद है जजेस ने इनकी भी तकरीर सुनी होगी। तो मेरी गुजारिश है जो कंट्रोल रूम में बैठे हैं कि उनको टीम्स को फिलहाल लाओ। मम्मा, हाँ बोलो। मैं आ गई। आई बेटा, जल्दी से चेंज करो, तुम्हें ट्यूशंस भी जाना। मुझे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। ये ड्रग्स क्या होते हैं? ड्रग्स? ये अल्फाज तुम्हारी ज़ुबान से निकला कैसे? यही सीखने जाती हो क्या? हम यही स्कूल जाते तुम्हें सिखाने के लिए? रुको, तुम ऐसे सुधरोगी तो नहीं। मैं तुम्हारी बाप से तुम्हारी शिकायत करूंगी। हाय अल्लाह, लगता है महंगे होंगे, इसलिए नहीं लगा रही है। मैं अपनी पॉकेट मनी से खरीदती हूँ, लेकिन ट्राई तो मैं जरूर करूंगी। अरे तो तू तो आज आई ही नहीं, मैं खुद ही दूध गली जाती हूँ। हेलो भैया, क्या चाहिए? वही जॉब सबको देते हो। पैसे लाई हो? हाँ, पूरे 500। 500 में क्या ही आएगा? चलो, इस बारी मैं तुम्हें दे देता हूँ, मगर किसी को बोलना मत। ठीक है भैया। निकालो। इस बारी 500 लाई है, अगली बार 5 लाख भी लाएगी इसके लिए। अच्छा है। आ गए ड्रग्स। अब मैं देखती हूँ ये होता क्या है। एक काम करती हूँ, छुपा देती हूँ, वरना मम्मा तो पीछे
जी मैंने पढ़ाई बहुत अच्छी। आगे सबू जाओ यहाँ से, तुम्हें काम है ना, चलो जाओ यहाँ से। अब तुम मेरी बीट से मिला मत करो, चलो जाओ। अरे अरे मैंने सुना है ये ड्रग्स लेती है। अरे हाँ, मेरे बेटे ने भी बोला था कि ये ड्रग्स लेती है, इसलिए तो हम उसको इससे मिलने नहीं देते। चलो हमें क्या, अरे ये क्या हमें बोलेगी, इसका तो खुद का बेटा ड्रग्स लेता है। कहती हूँ ऐसे लोगों से अपने बच्चों को दूर रखा करें। हम चलते हैं। मम्मा हाँ बोलो। पैसे चाहिए। कितने चाहिए थे? 100 रुपए। खुद निकालना। अरे मम्मा तो घर पर है कि नहीं, मैं खुद ही पैसे दे देती हूँ। ओह वाह, इससे ज्यादा माल आएगा, यही बेचती हूँ। मम्मा, मम्मा मुझे कुछ हो रहा है। मम्मा इधर आओ। मम्मा, सहर बेटा क्या हुआ? सहर बेटा उठो, क्या हो गया? सहर, हेलो डॉक्टर साहब। सहर, हेलो रानी, कुछ हो गया, जल्दी से आइए। ओके आई एम कमिंग। सहर, सहर, प्लीज वेट कीजिएगा। सहर, क्या हुआ है इसे डॉक्टर साहब? आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। हाय अल्लाह, ड्रग्स ले रही है, आपको नहीं पता? ड्रग्स, और आप लोग को तो ये भी नहीं पता ये कब से ले रही है। क्या आप लोग देख रहे हैं ड्रग्स के क्या नतीजे सामने आ रहे हैं? आज इनका बच्चा है, कल आप लोगों के भी बच्चे हो सकते हैं। ये सब लापरवाही और पुअर पैरेंटल केयर की वजह से होता है। अगर आप लोग अपने बच्चों को इन सब चीजों से दूर रखना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपने बच्चों का बिहेवियर नोट्स करें। क्या उनका बिहेवियर टाइम के साथ चेंज तो नहीं हो रहा है, या कहीं आपके बच्चे ज्यादातर टाइम अकेले तो स्पेंड नहीं करते हैं, या सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आपके घर से कोई सामान या पैसे चोरी तो नहीं हो रहे हैं। इन सब चीजों में एज अ पेरेंट्स आपको अपने बच्चों का सपोर्ट करना है, ना कि मिसेस भट्ट की तरह उनको नेग्लेक्ट करना है। एंड एज अ सोसाइटी दूसरों के घरों में झांकने से बेहतर है कि आप अपने घरों में देखें कहीं आपके बच्चे इस बीमारी का शिकार तो नहीं हो रहे हैं, या आपके बच्चे सहर तो नहीं बन रहे हैं। So let us reunite and say no to drugs, say no to drugs, say no to drugs. Thank you. ये जो ग्रुप था ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वीमेन अनंतनाग का अपना ग्रुप है और आफरीन एंड ग्रुप के नाम से बड़ा मशहूर है यहाँ पे। बेसिकली मैसेज जो है रोज हम ऐसे मैसेज देते हैं और मुझे उम्मीद है कि कुछ लेके जाएंगे यहाँ से। आज की जो ये खूबसूरत मजलिस है जो तबारीखी कॉलेज है वीमेंस कॉलेज अनंतनाग की ड्रग रिव्यूज जो है और उसकी इम्प्लीकेशन जो है सोसाइटी में। बेसिकली इनका जो छोटा स्केच था आपको ये समझाने का कि जम्मू कश्मीर में ड्रग रिव्यूज जो है और उसमें बढ़ोतरी हो रही है और हमारा एक मैसेज जाना चाहिए कि हमें इन चीज़ों को कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे मेरी गुजारिश रहेगी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए डिबेट का जो हमारा प्रोग्राम है मुकद्दस जावेद जहाँ पे हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वीमेन की वो तालिबा है, मेरी गुजारिश है वो यहाँ पे इंतजार कर रही है, आप अपना टॉपिक पेश करें। बिग हैंड फॉर मुकद्दस जावेद। Good afternoon, everyone. First of all, let me thank all of you for having me here today. I feel immense privilege and honor standing in front
of such respected teachers and dignified guests. My name is Repercussions and I'm a BCom third semester student representing GDC Women's and Anand today. We all are here to throw some light on drug addiction. The Constitution of India under Article 47 enjoins that the state shall take steps and bring prohibition of consumption of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health. The activities to reduce the drug use-related problems in the country can be categorized into two categories: supply reduction and demand reduction. It's now been exactly 100 years since drugs were just banned in US first, then drugs were banned in Britain, and then in other parts of the world also. It's a century since we made this really fateful decision to take addicts and punish them and make them suffer, because we believe that would deter them, it would give them an incentive to stop. But that doesn't seem to be working. Instead, actually almost everything we think we know about drug addiction is wrong, and if we start to absorb the new evidence about addiction, I think we are going to have to change a lot more than our drug politics. Normally, young people start with tasting the drugs first and then they get addicted towards them. They consume it due to various reasons, for example, stress and unfair expectations. The drugs make them feel high and the after effects are very relaxing. Drug addiction is one of the pervasive issues on the planet Earth. As time goes by, the issue gets bigger and bigger, and once you are addicted, you will forever be addicted. But one thing is for sure, that if you believe that you have a chance to choose what is right, you will always be able to choose what is right. There are certain signs of drug abuse, because in general, people who use drugs and who use alcohol typically display health issues like neglected appearance, changes in behavior, or irregular sleeping patterns. And the signs of substance abuse have been divided into two types: physical signs and behavioral signs. The physical signs include bloodshot eyes, flushed skin, track marks, weight loss, weight gain, unusual smell in breath or unusual smell in clothing. And the behavioral signs include inability to focus, problems in school, problems with the authority, lying, or indifference to family or obligations, and unexpected guilt or depression. So what can parents do on handling substance abuse? A child's relationship with his or her parents has a deep impact on their decision making. There is a delicate balance between a positive role model for your child and being a smoothering or overprotective parent. Eventually, teens have to make decisions for themselves, and sometimes these decisions may be terribly wrong. However, parents can take certain actions to reduce the likelihood of their children experimenting with drugs. I feel very privileged that I had got this opportunity to share my views with you. I request you all to stay away from drugs and always reach your parents and family to resolve any problem in your life, because drugs may look attractive initially, but it has the capacity to destroy your future. And let's break this chain and let's say no to drugs. Thank you so much. Thank you, आपकी मुक़द्दस जावेद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज विमेन अनंतनाग की। मेरी आपसे गुजारिश है, जो हमारे जज साहिबान हैं, अगर कोई 4 मिनट से ज़्यादा अपनी तकरीर खींचे तो उनका नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए, बिकॉज ये जो डिबेट है ये 4 मिनट का है। तो डिबेट को आगे बढ़ाते हुए मेरी गुजारिश रहेगी उज़ैर लतीफ़ साहब से, जो सेंट जेम्स इंटरनेशनल स्कूल हैं, वेरी बिग हैंड उज़ैर लतीफ़। And dear audience, I welcome you with Islamic greetings as Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself, Uzair Latif from St. Zein's International School, and I am here to make you aware about drug abuse. What is drug abuse? What are its causes? What are its consequences? And all the other things that are related to drug abuse. Okay, so I'll start my topic. You all are aware that our society is full of social evils which are increasing day by day. Among these social evils, mention can be made of cocaine, we can say the many hallucinogens, and several other forms of narcotic and psychotropic drugs. This drug abuse among all the social evils in this modern world come at the first place. So we need to know that what is a drug. The word drug, it's oftenly misunderstood by everybody. I saw here that my sisters who before me gave me the topic, they took drug as a negative thing. But when we talk about the word drug, it simply refers to a medicine. It simply refers to a medicine. And after that, drug
abuse is the excessive, maladaptive or addictive use of this drug for non-medical purposes. And dear audience, this drug affects the mind of a person, it affects the lifestyle of a person, it also affects our society. This drug abuse creates a very huge impact on our society because due to this drug abuse, as it affects the mental state of a person, that is the consciousness and unconsciousness of a mental health of an individual. We see in Kashmir, nowadays 70,000 people indulge in drugs, and if we check the number of people that are indulged in these drugs, the number goes to 190 million. It's not a small number. 190 million people are indulged in drugs. Why these people are indulged in drugs? We see most of the people who are indulged in these drug abuse are mostly teenagers. Why? Because of the adolescence period that's going on in an individual's life, he gets several problems like he gets anxietiness, and he also gets in depression and many other reasons. So when, in order to overcome these his state in which he is, what he does, he indulges in drugs. And how he indulges in these kind of drugs is due to addictive friend circle, or firstly the mobile phones that we use. They are also one of the major causes of drug abuse. So the need is that we should check whether a person is indulged in drugs or not, and we should do a counseling right to him that he should not indulge in these drugs. And it's the need of an hour to have a control on this drug abuse, and it's our responsibility to on individual level so that we can have a control over these drugs, and we can make first our state and our country Nasha Mukt Bharat. Thank you and have a nice day. Thank you, Uzair Latif. मेरी गुजारिश है, I'd like to request Rihana Shabir from Elite Public School. Big hand for Rihana Shabir. Very big hand. Topic is already mentioned: drug abuse and its repercussions. Good day everyone. I'm Rihana Shabir of Standard from Elite Public School. And today I'm here to speak about drug abuse and the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act of 1985. The Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act of 1985, or NDPS Act, is a legislation that deals with the narcotic drugs and psychotropic prohibition in India. The NDPS Act prohibits a person from the production, manufacturing, cultivation, storage, transport, or consumption of any type of narcotic drugs or psychotropic substance. Dear audience, feral consumptions of drugs and how it's destroying the lives of our youth is a point of discussion in this medium. Drugs, as we all know, are an illegal matter. Some people smoke, inject, eat or drink for their mental and physical effect that leaves. It's observed that students start consuming drugs out of stress or of unfair expectations of their teachers as well as their parents. Lack of emotional support and disorder in their families make them vulnerable and increase their dependency on drugs. Many of them use these drugs in order to calm down their state of mental agitation. Sadly, the students fail to realize that consumption of drugs has a severe impact on their mental and physical health, such as they start experiencing mental disorder, their intelligence level decreases, they even start experiencing deadly disease and untimely death. It's very difficult for him or her to get out of its impact unless and until the society comes for rescue.
such as in drug rehabilitation centers, they gain a new life. But in some cases, it involves a high cost. In fact, there are many cases where even the drug rehabilitation centers fail due to the worst condition of patients. Therefore, students must refrain themselves completely from the usage of drugs before it destroys their future and takes away their life. Drugs can even destroy a complete generation. So think wise and act smart. At last, I want to conclude by saying that drug abuse should be an absolute no for all. We, the students, are our country's future. So stay away from its use. Thanks and have a nice day. थैंक यू रेहाना शबीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे गेस्ट आने वाले थे वो भी बिजी हैं और हम कंटिन्यू करेंगे। जो हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं और गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, और मैं साथ नाम लेना चाहूँगा मारूफ ट्रेड यूनियन लीडर हैं हमारे बीच में फैयाज अहमद पंजाबी साहब, जो पुलवामा से चल के आए यहाँ पे। हम उनका भी आज की इस खूबसूरत सी मजलिस में आदरणीय टीम की तरफ से दिल की गहराई से इस्तकबाल करते हैं। अभी डिबेट के सिर्फ दो हमारे स्कूल रहे हैं। शाहजेब बिलाल, बिग हैंड फॉर शाहजेब बिलाल, दैट पब्लिक स्कूल अनंतनाग। शाहजेब बिलाल। A very pleasant morning to all the increased guests and delegates. This is Shahzeeb Bilal, a grade 6 student from Ragli Public School, Anantnag. And today I stand before you compelled to draw your attention on an epidemic that silently erodes the very fabric of our life. It's a battle that doesn't only leave scars on bodies, but on spirit, on soul, on mind, on dreams, and on one's own families. Standing in front of you with my heart torn apart, I am bearing witness to the onslaughts of drug abuse and its repercussions. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran, chapter number 5, verse number 90, that indeed, all who you have believed, alcohol, gambling, and these toxic activities are the works of shaitan. If you stay away from them, you will surely be succeeded. But dear friends, just take a moment to look at your society. How many of us have stumbled to the silent pool of drugs? How many of the relations are strained? How many of the friendships are neglected? And how many of the intimate connections are lost? In the faces of those ensnared, I see the flicker of lost hope. I see the dreams that have been derailed. I see the futures that have been stolen. I see the greatness to potential that have been smothered. Remember, people who are addicted to drugs are not just the victims to the circumstances. They are the warriors that are fighting in the battlefield against that foe known as drugs. Drug abuse. It's not a small problem that affects only a few people, only a few selected people. It's a well-prepared force lurking in the darkness of our communities, infiltrating in our homes, tearing apart the very fabric of our life. Just remember that drug abuse has no mercy. It claims the young and the old, the poor and the rich, the man and the woman, the youth and the old, the black and the white, and everybody leaving a trail of destruction on its rise. What actually is drug abuse? In our modern society, if you take a look at your society, this is a society that continuously fails to provide support to the youngsters. It was just about raising your hands, saying, we are here for you and we care for you. But something is happening wrong. We are not able to provide support to our youngsters. And that's the reason why most of the cases are happening in India about drug abuse. Let me show you a graph. This is the graph that shows the suicides committed due to drug abuse from 2010 to 2019. You don't need to read the graph. Just look at the graph. The graph is increasing, not decreasing. This means that we, the Indians, we have the oldest cultures and civilizations. We are ranked on the top among the populated countries. But still, when we move to the path of development,
our future, our generations are getting mentioned because of these drugs. Let me show you a second slide. Do you know what it is? It's a pie chart. This pie chart represents the vital organs of your body that are affected by the drugs. The major sector of this pie chart is the blue one that represents the 36. And here it's written that it represents your cardiovascular system. If I ask all of you a simple question, what is the most vital part of the human body that helps us to survive? It beats continuously, and when it stops, we all will die. The most of the responses I will get from you audience is the heart. And this is what? Drugs affect our heart. It means physically drugs affect your heart and make a person to die. Our youth takes drug abuse as a manifestation of pain and escape from depression and anxiety that they get from this society. But what drug abuse is actually, it's in front of you. Let me show you a third slide. If I only say about the India, the youth in our world and all the other countries. But have you thought about your motherland, your valley Kashmir? What's happening in the Kashmir? Is it going right or wrong? Then this is very shameful to say that the Kashmir is the second drug hub of India after Himachal Pradesh. Drug abuse in Kashmir. Do you know that there are 13 lakh plus drug abuse people in Kashmir? That's more than the total population of Arunachal Pradesh. The first most drug abused state in India is the Himachal Pradesh and then is the Kashmir. And it's the first one in the northern India. It means that first of all, let's raise a finger to our own motherland, that's the Valley Kashmir. Everything is not going well. That's together when we stand here, we conduct a campaign. Let's take a commitment with us that let's be among the change makers, the voice raisers who refuse to take drugs. In our wavering commitment, in our wavering compassion, in our wavering determination, we all together overcome this problem. We all together make a new world where we all together say no to drugs. Thank you. Thank you. ये लास्ट डिबेट का जो लास्ट ये लेक्चर है और ये है हाइफा कादिर big hand for Haifa Kadir, Rising Institute of Scientific Education Congress. Again very big hand. Again, thank you very much. She is Haifa Kadir. Honorable Chief Guests and respected dignitaries, myself Haifa Kadir and I'm from Repercussions. Today we are gathered here to educate each other about MBBS. The statutory control over narcotic drugs was being exercised under the Opium Act. First of all, let me speak on the topic, why do we get addicted to drugs? अगर आप लोगों ने देखा होगा, mostly when people get depressed, when they get frustrated, and when they get tired of the same routine they have, वो लोग कुछ नया try करना चाहते हैं. And after that, अगर उनके आगे पीछे कोई स्मोकिंग करता है, अगर उनके अराउंड कोई स्मोकिंग करता है, उनकी मेंटालिटी में ये भर जाता है कि स्मोकिंग से एक सैटिस्फैक्शन मिलती है. स्मोकिंग इज समथिंग जो कि हमें रिलैक्स करता है. So to escape from the frustration, so to escape from the depression, वो लोग स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं. But with the confidence कि हम लोग कभी भी क्विट कर सकते हैं because we aren't addicted. और वही होता है उनका फर्स्ट स्टेप स्मोकिंग का. उसके बाद teens be like, it's cool dude, but is it seriously cool? I need answers. Is it seriously cool? No, it's not cool. हमें इससे क्या मिलता है? कुछ नहीं. Wasted of time, wasted of money, and we get health issues too. Will you prefer to stay on your bed for days, or you will prefer to work on yourself? I need answers. You will prefer to work on yourself, right? So, and
in jail, rest to him. Okay, let's come back. Now let's see. अगर आप हम लोग एडिक्ट हो ही चुके हैं स्मोकिंग से, हमारे आगे पीछे कोई एडिक्ट हो चुका है, अब हम लोग खुद कैसे बाहर आए, या जिनकी एडिक्शन हो चुकी है उन्हें उससे कैसे बाहर आए। फर्स्टली खुद के सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना सीखो। जो आप लोग अपने माइंड को बोलोगे वही होगा। सो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बोलो, मेरे आगे पीछे, मेरे अराउंड जहां भी स्मोकिंग हो रही है, उस स्मोकिंग के धुएं से मुझे सफोकेशन होती है। द सेकंड थिंग, बी योर ओन कंफर्टेबल। आपको पता है जब हम खुद का काम करते हैं ना, सो द मोस्ट थिंग यू नीड इज कि खुद के साथ खुद ही कंप्लीट करो। यू डोंट नीड टू कंप्लीट योरसेल्फ विद अदर्स। सो खुद को बोलो कि मैं खुद ही खुद को ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट क्यों कर रही हूँ, मैं खुद ही उन ट्रैक्स पे क्यों जा रही हूँ जो कि मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं खुद ही एक हराम ट्रैक पे क्यों जा रही हूँ। Even it's mentioned in Quran, in Al-Baqarah, ayat number 195, that don't put yourself into danger by your own hands. So वैसी चीजें मत करो जिससे आपको फ्यूचर में रिग्रेट हो। Yeah, quitting is hard. It is hard. But regretting in future is more hard than quitting. After this, seriousness. खुद के लिए सीरियस हो जाओ। Because आप लोग काउंसलिंग थेरेपी ले लो, आप लोग क्या कर लो स्मोकिंग से बाहर आने के लिए, कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं रेडी होगे कि मुझे स्मोकिंग या ग्रुप A, B, C के ड्रग से बाहर आना है। So be serious for yourself. Okay, so let's get serious for a while. Put your hands on your heart. Everyone, put your hands on your heart and repeat with me. I promise not to use any narcotic products. Thank you. बहुत खूबसूरत सबने बोला है और कुछ लोगों ने तो बड़ा एक्सटेम्पोर बोला है इस पे या इसको छोड़ के यहाँ पे। ये कला बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए बिकॉज किसी ऑडियंस के सामने बोलना बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। मेरी आपसे गुजारिश है बच्चियों से, आपको बहुत आगे फील्ड में जाना है, आपको कल IAS KS में जाना है, वहाँ आपको बोलना भी पड़ेगा। फिर मीडिया वाले आएंगे ना, तो इस पे घर में रियाज किया करें, इस पे प्रैक्टिस किया करें, घर में अकेले बैठा करें और जो दीवारें हैं उनको सुनाया करें और आप बहुत कुछ हासिल करेंगे। बिकॉज आज के दौर में वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनकी जो सर्टिफिकेट के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए और बोलचाल पे बहुत ज़्यादा है। आप जब IAS या KS का इंटरव्यू फेस करते हैं या जुडिशरी का इंटरव्यू फेस करते हैं तो इंटरव्यू में बड़े मार्क्स होते हैं कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, आपका मॉड्यूलेशन कैसा है और आपने लफ्ज़ों को कैसे बोलना है। वो क्वेश्चन उर्दू या क्वेश्चन अंग्रेजी हमें उस टाइम थोड़ा बहुत ना साइड में रखना है, तो लिहाजा रियाज करें। मैंने बात बेसिकली कही है कि जो लोग यहाँ पे जिन्होंने बोला सबने अच्छा बोला है।